आज हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स के सिलसिले में लास्ट लेक्चर है और हम आज स्टडी करेंगे बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। ये एक ऐसा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है जो नेगेटिव एज वेट्स के साथ काम करता है। हमने देखा था कि डाइक्स्ट्रा के केस में नेगेटिव एज वेट्स अगर आ जाए तो डाइक्स्ट्रा की जो ग्रीडी नेचर है उसकी वजह से वो काम नहीं करता, ऑप्टिमल ट्री फाइंड नहीं करता। बट बेलमन फोर्ड इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम. Dynamic programming is also often used in optimization problems, and shortest path problem is an optimization problem. So DP in this case is powerful enough to handle negative edge weights. और बेलमन फोर्ड में इसकी एक काफी अनयूजुअल इम्प्लीमेंटेशन है डायनामिक प्रोग्रामिंग की. इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ सेंस के आमतौर पर जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि छोटी सब प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, फिर उससे बड़ी सब प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, और फिर उसी ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं, बॉटम अप, सॉल्व द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड द बिगर सब प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन. बेलमन फोर्ड ने भी यही करना है, बट इट इज नॉट वेरी ऑब्वियस कि हाउ डू वी डिसाइड that what are the shorter sub problems and what are the bigger sub problems. So there's a very creative and unusual way in which Bellman Ford achieves this. So let's see that. Again, this list is there, and now we are at the end of the list. You will see that the running time is actually much more than the running time of these earlier three algorithms that we saw. So we will get to this point and we'll see कि हमारे जो complexity है इन algorithms की वो progressively बढ़ी है. So let's first discuss the idea of Bellman Fold. And before I do that, I'm going to remind you that when we were doing Dijkstra, we talked about a method called relax, जो कि एक edge को relax करता है. Let me just quickly remind you कि वो method क्या कर रहा था. जब आप relax call करते हैं किसी edge पे, let's say edge x, y पे, और weight भी उसको pass करते हैं, तो वो कुछ ऐसा था कि अगर x की डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड है और वहां से एक एज जा रही है y की तरफ, y की भी कोई डिस्टेंस मार्क्ड है, ये वेट है wxy, तो आप y को अपडेट कर सकते हैं थ्रू x. इस चीज को कहते हैं आप रिलैक्स कर रहे हैं उसको. और वो कैसे अपडेट कर सकते हैं? वो रिलैक्सेशन तब होती है जब डिस्टेंस ऑफ y जो करंटली मार्क्ड है वो अगर बड़ी हो from the distance of x plus weight of xy. मतलब ये कि जो नया कनेक्शन y के थ्रू आ सकता है, ये जो एज है, this edge can actually more optimally update y. So that's called relaxing the edge xy. To be quite honest, I still don't think this is a very good name, but this is the name that goes in literature. So relax fxy, relax wxy की वजह से होता है. So let's do that. So हम ये कंडीशन लगा देते हैं, if distance which is marked on y is actually greater than the distance which is offered through x, okay, then you make this update कि distance of y को आप सेट कर दें इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x प्लस वेट ऑफ xy. और जाहिर है कि वो जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बन रहा होता है तो आप साथ ही पेरेंट जो है y का वो भी अपडेट कर देते हैं टू x. और अगर ये रिलैक्सेशन होती है, मतलब अगर आप ये y में इस इफ में एंटर करते हैं तो फिर आप रिटर्न ट्रू कर देते हैं. दिस इंफॉर्मेशन विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस knowing that relaxation was done or not done. Else अगर ये true यहाँ return नहीं करता तो आप यहाँ आ जाएंगे and then you will return false. Okay, makes sense. So this is the relax function, and I just wanted to remind you of this because we're going to use it. Now, what does Bellman Ford do? Bellman Ford की main idea ये है, let me just write these things down here ताकि हम इसको हमारे सामने ये हो. कुछ facts हैं जिन पे बेलमन फोर्ड हमें गौर करने को कहता है.
और वो फैक्ट्स ये हैं कि जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ट्री हमने प्रोड्यूस करना है, ये जो येलो और व्हाइट में मैंने यहाँ लिखा है, ये आपका फाइनल सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ट्री है और ये मेरा गोल है। मैंने इसको फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने फाइंड आउट करना है और ये एक ग्राफ के अंदर कहीं एम्बेडेड है। Think of a graph with 10,000 nodes, with thousands over thousands of edges. And inside those edges, there is this little, comparatively little subgraph, yeah, tree, which contains the 1,000 vertices and just the 1,000 edges. इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि this tree is hidden inside that large graph. And basically the perspective is this: we are searching for the single source shortest path tree, which is, well, let me use my own word here, hiding in the graph. Okay, so what is Bellman-Ford's solution to this search? वो ये कहता है कि देखिए, let's think of a magical situation. Okay, magical या miraculous situation. So ये एक miraculous situation, एक miracle है हमारे पास होने वाला है। वो क्या miracle है? आपको पता है कि हमेशा जब हम सेटअप करते हैं शुरू में, तो we start from S, जो सोर्स है उसमें हम जीरो डिस्टेंस मार्क करते हैं, बाकी सब पे इन्फिनिटी होती है। मिराकुलस सिचुएशन ये है कि एक मिरेकल होता है और somehow मैं इस एज को और इस एज को पहले रिलैक्स कर देता हूँ। मतलब मिराकुलस सिचुएशन ये है कि मैं रिलैक्स का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसमें एस जे डब्ल्यू और फिर उसके बाद रिलैक्स एस आई डब्ल्यू, ये हो जाता है। If this happens, if miraculously I just do this, I have basically found the first level of the tree, right? Now obviously you will be right to ask, how do I know that this is the first level of the tree? I don't know that. I don't know that I and J are in the first level of the tree. I don't know the tree. Why is C not in the first part of the tree? Why is SC not an edge in the first half of the tree? All those questions are valid. But in the miraculous situation, if I can somehow just relax these two edges, that will be great, because then I know कि यहाँ पर optimal answer है, यहाँ पर optimal answer है, क्योंकि I magically know कि ये actually shortest path में पहले level पे है, तो ये optimal solutions ही होंगे ना from these edges. Okay, let's continue with the miracle. So the miracle then happens, and what I do is, अब यहाँ J और I तक तो मुझे optimal मिल चुका है, इतना tree मिल चुका है. What are the edges that I can relax next? Optimally relax them. So what if I relax this, this, and this? That will be great, because then I will find this second part, level of the tree. And then this, and then this. Now remember, if for example अभी मैंने I B को relax नहीं किया और मैं पहले B H को relax कर देता हूँ, then I will not find the optimal path up till H, because B तक अगर optimal path नहीं मिला तो H तक कैसे मिलेगा? So this is exactly what DP does, right? डीपी ये कहती है, अगर आप मुझे एस तक का ऑप्टिमल पाथ बता दें जो मुझे पता है, तो फिर मैं वहां से जी जे और आई तक का ऑप्टिमल पाथ निकाल सकता हूँ. Okay, because J or I are only depending on the S sub problem, so I can use the solution of this sub problem to find J and I. Then if I know the answers till J and I, then I can find the answers till A, C, and E, and D, and B. So the single source shortest path tree is actually the order in which I should solve these subproblems. I should first solve S, then I should solve J and E by relaxing Sj and Si. Then I should solve Ja, Jc, Jb, Id, and Ib. Okay. Then I should solve
this one and this one and this one. So that's the order, but the order itself is actually the solution of the problem. So I don't know, right? I don't know the solution of the problem. So I can't find out कि ये जो miraculous order है, ये miraculous order क्या है? क्योंकि वो miraculous order ही तो मैंने actually tree ही तो मैंने find करना. So I can't. So this is like the miraculous order of relaxing the edges. Okay. So we don't know the miraculous order of relaxing the edges. Okay. Because this is not the picture that is there in the real world. In the real world, like in the actual situation, there are other edges here as well. Okay. And what are those other edges? All the edges that are not part of the tree. There are many of them. Maybe ye edge hai yahan pe, maybe ye edge hai, maybe ye edge hai. How do I know where this tree is? This tree is just hiding somewhere, right? So I don't know, maybe this is there, maybe this is there. There are cycles, there are weights, there's everything. So now you see what's the situation really, right? मुझे नहीं पता कि ये white edges कहाँ पे है. Orange edges भी हर जगह पे हैं और जो white edges हैं वो white नहीं है, वो भी orange ही है. Like I don't know what's where. So I don't know any right order of relaxing things. So the question then is, ये tree hidden है, how do I do is there any way that I can do the relaxation that I actually end up optimally relaxing J, like optimally finding the distance till J and I and A and C. जब मैं कहता हूँ finding optimal distance till J, तो उसका that is another way of saying that I have found the shortest path tree up till J, right? And finding the shortest path till A, that means I have found I have find the shortest path tree till A, right? So how do we do this? And the solution, I would say that you should stop this, like pause this video and just think hard about it, like for maybe 10-20 minutes, because just going through the material is not really what makes you learn. This is a problem that you can try to solve on your own. The question is, what is a good way to relax the edges? अब इस दफा हम कोई हीप की बात नहीं कर रहे, हम किसी बीएफएस की बात नहीं कर रहे, हम किसी चीज की नहीं बात कर रहे. हम कह रहे हैं ये ट्री कहीं छुपा हुआ है और अगर मैं पहले फॉर एग्जांपल इस चीज को रिलैक्स कर देता हूँ, इस एज को, तो वो उसका शायद इतना फायदा नहीं है, बिकॉज अभी तक तो ये तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में जब तक मैं पहले एस जे और फिर जे आई ए रिलैक्स ना करूं, तब तक मुझे ये पाथ नहीं मिलना. तो वो क्या ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन हो सकता है जो कि मुझे हेल्प कर सकता है? And then I will tell you what is the solution given by Bellman 4. So let's talk about the Bellman 4 solution. And I think the way you will see that it's a very simple solution, actually, the way it is, presented. Well, the answer is we do not know what is the correct order of relaxing the edges. That is true because we don't know the tree. So this is what we do. We do not know the correct order of relaxing the edges. Therefore, and this is the solution, we relax all edges in any order. All edges in any order, but repeatedly. Okay, what does that mean? So let's go back to our tree. So what I'm going to do is I'm going to just ask you to focus on the tree once more. Okay, let's forget about these orange
edges, the other edges that exist in the tree. And I'm going to ask you to just again focus on just the tree. Okay, but those orange edges are there. We are just not focusing on them. क्या होगा, एक फेज में आप सारी एजेस को रिलैक्स कर देंगे किसी भी रैंडम ऑर्डर में. थिंक ऑफ एनी रैंडम ऑर्डर. मे बी आप पहले आईडी को रिलैक्स करते हैं, ज्यादा फायदा नहीं होता. आई के ऊपर इन्फिनिटी लगा हुआ है, डी पे इन्फिनिटी लगा हुआ है, रिलैक्स होकर कुछ भी नहीं होना. सी आई एफ एफ को रिलैक्स कर देते हैं, बी एच को रिलैक्स कर देते हैं, सबको रिलैक्स करते हैं, सबको करते हैं. लेकिन सब के अंदर एस जे और एस आई भी शामिल है. सो यू नो दैट इन दिस one phase of all edges being relaxed, you have correctly found these two edges, and these J and I have been optimally marked. So in one phase, you find this much of the tree. Okay. So phase को हम कैसे define करेंगे? Phase is defined like this. Relax all edges in any order. So एक दफा तमाम एजेस को किसी भी ऑर्डर में, किसी रैंडम ऑर्डर में हो सकता है, कोई फिक्स्ड ऑर्डर बना लें शुरू में, हमेशा उस ऑर्डर में कर लें, या हर दफा रैंडम ऑर्डर में कर लें, डजंट मैटर. सो देयर आर ई एजेस. सो यू कॉल द रिलैक्स मेथड ई टाइम्स एंड रिलैक्स एवरीथिंग. नाउ समटाइम्स हो सकता है कि इफ यू आर वेरी अनलकी, तो क्या होगा कि सारी एजेस, बाकी सारी एजेस जो है वो पहले रिलैक्स होंगी, एंड में ये एस जे और एस आई रिलैक्स होंगे. But even then, you will get at least SI and SJ correctly relaxed. J will be optimally, will have the optimal distance. I will have the optimal distance at the end of the first phase. So, इतना जो tree है, ये आपको मिल जाएगा by the end of phase 1. So, when you do phase 2, सारी एजेस दोबारा आपने की, ये दोनों दोबारा रिलैक्स होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर है पहले वही होगा. लेकिन I hope you can see that after phase 2, this edge, this edge, this edge, they will all three be optimally relaxed because J के ऊपर optimal value लगी हुई है. So जब आप इस पे आएंगे, J A जब होगा तो A के ऊपर optimal value आ जाएगी because this is the shortest path tree. C के ऊपर optimal value आ चुकी होगी, E पे optimal value आ चुकी होगी, इस पे भी आ चुकी होगी. So जब second phase खत्म होगा तो कम से कम इतना ट्री आपको मिल चुका होगा. ये phase 2 आपको कम से कम यहाँ तक ट्री ले आया होगा. नाउ मैं कम से कम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा लकी भी तो हो सकते हैं. हो सकता है फॉर इंस्टेंस पहले फेज में ही जब आपने एक ऐसे ऑर्डर में एजेस को रिलैक्स किया कि पहले आप एस जे को रिलैक्स कर गए, फिर जे सी को रिलैक्स कर गए बाद में, और फिर सी एफ को रिलैक्स कर गए, तो पहले ही फेज में हो सकता है कि आपको एफ तक का पाथ मिल जाए ऑप्टिमल. एट दैट टाइम यू विल नॉट नो दैट इट इज द ऑप्टिमल, बट you would have like marked F optimally, C optimally, J optimally, and S optimally. Okay. So, but let's say in the first phase, SJ पहले relax हुआ, फिर CF relax हुआ. तो अगर CF JC से पहले relax हो गया तो पहले phase में आपको F तक पाथ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर JC relax हुआ तो आपको C तक पाथ मिल जाएगा. So, कम से कम एक level of the tree एक phase में आ जाता है. सो पहले फेज में फर्स्ट लेवल आ जाएगा, दूसरे फेज में कम से कम सेकंड लेवल आ जाएगा, तीसरे फेज में कम से कम थर्ड लेवल आ जाएगा. ओके. सो एवरी फेज करेक्टली, या इसको बेहतर वर्ड होगा ऑप्टिमली marks, yani computes the shortest paths of nodes in the next level. Okay. So शुरू में सिर्फ सोर्स नोड के ऊपर करेक्ट डिस्टेंस लगी हुई है 0. पहले फेज के बाद शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जो भी है उसके पहले लेवल पे जो नोड्स हैं उनके ऊपर करेक्टली मार्क डिस्टेंसेस लग जाएंगी पहले फेज के बाद. दूसरे फेज के बाद
शॉर्टेस्ट पाथ ट्री के दूसरे लेवल पे जितनी नोड्स हैं उन पे करेक्टली मार्क डिस्टेंसेस लग जाएंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So every phase comprises of E calls to relaxation, the relax function. Now, here is the question: how many phases are needed? Okay, how many phases are needed? And this is the question which you should definitely pause the video, give it like 4 minutes, and you should know how many phases are needed. Okay, now let me discuss it. I hope that you have thought of the answer yourself. Look, every phase is going to isolate one level of the tree. So the question is what is the maximum number of levels that a tree can have? तो अगर आपके पास n vertices हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन n vertices का एक ट्री बनाएं जिसके मैक्सिमम पॉसिबल लेवल हो, वो ट्री किस किस्म का होता है? BSTs वगैरह भी आपने पढ़े हैं तो उनके अंदर भी आपने ये चीज देखी थी. वो ट्री जो कि एक सिंगल लाइन हो इस तरह की, राइट? ये वो ट्री होता है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल लेवल्स होते हैं, बाकी हर ट्री में इससे कम लेवल्स होंगे. और जो इस तरह का ट्री है उसके कितने लेवल्स होंगे? वेल, दिस लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, level 3. So actually, if you have like 4 nodes, you need how many relaxation phases? Maybe 1, 2, 3, 4. अगर V nodes हैं तो V से ज़्यादा relaxation phases की कोई ज़रूरत नहीं है, because even in the worst case, V phases के अंदर पूरे का पूरा ट्री आ जाना चाहिए. अगर आप इमेजिन करें कि एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री किसी ग्राफ का इस किस्म का है कि वो बस एक सोर्स नोड से डायरेक्ट एजेस जा रही हैं हर जगह. Let's say this might be 1000 edges. This might be 1000 edges. Sorry, 1000 vertices and then these 1000 edges. But if this is the shortest path tree, Bellman Ford will find it in one phase, because these will all be optimally marked in just one phase. So for Bellman Ford, I have this example, not this example here. Example मैं आपको separately दिखाऊंगा. But I'm going to just write the code for Bellman Ford because it's so simple that it doesn't even look like DP code, but it is DP. So Bellman Ford में G, V, E, W और source S आपके पास आ रहा है. और again, like every single source shortest path algo, हम setup करेंगे पहले. Setup ये होगा that you have for each x in E, सबसे पहले तो आप distances mark कर देते हैं कि जितनी भी distance x हैं उनको आप infinity कर देते हैं और जो parent है उनको आप nil कर देते हैं और आखिर में फिर just one of these nodes, the source node, it gets 0. Okay, यहाँ से शुरू करना. After that, we just need 2 lines for Bellman Ford. Repeat V times. And what do we repeat V times? Well, V phases हमने करने हैं. So for each edge xy in E, again ये loop किस order में चल रही है, edges को किस order में relax कर रही है, doesn't matter to Bellman Ford. Although yes, there are some orders which are more lucky, right? Think of this. There is a tree. Let's say this is the shortest path tree. Now there is a lucky order in which if you relax the edges in this order, you find this tree in one go, in one phase. So, but we don't care for the worst case, okay? Worst case time जो आना है वो doesn't matter कि ये जो iteration है ये किस order में edges में से गुजर रही है. We don't design algorithms for best cases. We design them for worst cases, right? So for each
of these edges, simply call relax. Okay, X, Y, and W. And that's it. That's the algo. And this is a phase, right? So you need V phases at max. Now, one thing that I can add to it, okay? Uh, as I've said that we can get lucky, right? So we can get lucky, जैसे कि मैंने ये example आपको दिया था, कि think of this very extreme case, और ये extreme case है, इससे less extreme case भी हो सकते हैं. We can get slightly lucky also. This is like when we get very lucky. वो ये है कि इस तरह का ट्री था और अब इसमें और भी सब एजेस हैं, लेकिन एक ही फेज के बाद ये तमाम नोड्स ऑप्टिमली मार्क हो गई हैं, यानी ये सब चीजें रिलैक्स हो गई हैं. ऑप्टिमली मार्क होने का मतलब क्या है कि जब नेक्स्ट फेज आएगा और मैं अपने रिलैक्स के फंक्शन को बार बार कॉल करूंगा, रिलैक्स विल रिटर्न फॉल्स एवरीवेयर. Remember that relax calls true, it returns true and it falls. So let's go back and look at relax. Relax returns true if relaxation has actually happened. If something was non-optimal, y had a non-optimal distance and we made it better. Okay, and otherwise it returns false. But if everything has already been optimally marked, let's say just in one phase everything is optimally marked, after that in the next phase relax will return false for every edge, and therefore you will know that I don't need to do any more work. Okay, I've already resolved, I've already found the shortest path tree. So उसका जो कोड है वो एक काइंड ऑफ की एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है जिसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं. तो I'm just going to add this in green. So when you do this phase, जो relax है, अगर वो एक भी true return करता है, यानी कहीं पे भी उसने relaxation की और वो true हुआ, तो हम continue करेंगे, otherwise हम break कर देंगे. Okay, one way to do it could be, you can write better code than me I think, but let's see कि जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपने ऐसे करना है कि एक फ्लैग रख लेना ऊपर. लेट्स हैव अ फ्लैग हियर. ओके, ये एक बुलियन है, फ्लैग. ओके, और इसको शुरू में फॉल्स किया हुआ है. इनफैक्ट इस पॉइंट पे यू हैव टू ऐड अ लाइन दैट फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स. ओके, और जब भी रिलैक्स होता है तो आप ये करें कि रिलैक्स जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसकी आप फ्लैग के साथ ऑरिंग कर दें. सो फ्लैग equals flag और ये लॉजिकल और है दिस थिंग. सो लॉजिकल और जो है वो मेरे ख्याल है मैं C++ का ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ. सो rather than the Python like syntax, let's use the C++ like syntax. So this is inside the for loop. Okay, so then in the repeat loop you should only repeat if the flag is true. राइट. सो जब आप इसमें एंटर करते हैं शुरू में हमें फ्लैग को बिल्कुल शुरू में ट्रू कर देना चाहिए ताकि वो पहली दफा एंटर कर जाए. ओके, सो फर्स्ट इट विल एंटर, बट आफ्टर दैट it just sets the flag to false, and somewhere in the phase the flag should become true. So अगर एक भी true होता है तो flag true हो जाएगा. वो औरिंग हमने की हुई है. So repeat v times को हम अब चेंज कर देंगे. सो जो रिपीट आप कर रहे हैं वो अब दो कंडीशंस पे हम कर लेते हैं. What are those two conditions? The conditions are, well, I think we will have to keep a count. So we have a count I, let's say, which is equal to 1. So um, while I is less than D, okay, and flag is true. Okay, and just at the end here this is in the while now, we will say I is I plus 1. So now rather than blindly repeating V times, which was correct, but maybe we can be more optimal.
हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा फेज अगर आता है जिसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं हुई, इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमने शॉर्टेस्ट पाथ ट्री पूरा ऑप्टिमली मार्क कर दिया, तो फिर उस केस में हम नेक्स्ट टाइम इस इटरेशन में, क्योंकि फ्लैग फॉल्स होगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड देयरफॉर we will stop. So this could be an optimization, but again, when we look at the worst case, in the worst case, we will go through all um, all of these phases. So V ke V phase lagenge worst case when something like, maybe something like, well, this could be one possible worst case कि कुछ ऐसा है और आप जब भी करते हैं हर फेज में पहले में आपको सिर्फ यही मिलता है बिकॉज आपने पहले ये सब अपडेट की और फिर आखिर में ये की, तो कुछ ऐसे ऑर्डर में की और फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है, तो आपको वी फेजेस लग ही जाते हैं। सो अगर ऐसा है तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम बेलमन फोर्ड का क्या बनता है? जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है बेलमन फोर्ड का, दैट इज इक्वल टू वी दफा वाइल लूप चलेगी और उसमें ई दफा ये फॉर लूप चलेगी। रिलैक्स ओ ऑफ वन है, सो ओ ऑफ वी इंटू ई as we wrote down at the beginning. Okay, O of V into E. Now, if you think about it, this running running time V into E, this is much more than Dijkstra. I mean, Dijkstra V या E को log V से multiply करता है. So that's much cheaper than this. E जो है, it could be a fairly big number. E is probably as much as V, or maybe even it can go as high as V square. So this could be as big as V cube. This could be as big as V cube if E is near V square, if it's a dense graph. Okay. Whereas log of V is much smaller. Okay, log hai ye. So this is obviously a more like a time consuming algo, but then it's doing a bigger job. It's taking care of negative weights. So this was Bellman Ford, and there are a few curious things about Bellman Ford. There's one nice, interesting aspect of it, which I'm going to discuss, but I will do that in the next video. So this was the simple Bellman Ford algo, which is a very nice application of dynamic programming. And I hope that you can all convince yourselves that this is dynamic programming, but it is doing it in a very clever way.